and Environmental Nanotechnology. Recently, we published the book Environmental Nanotechnology, which is published by CRC, Taylor and Francis. So it is a very interesting subject working on environmental nanotechnology, as as most of the participants are students and student of biotechnology, so they are very much aware about that. In 2000 there is a boom in biotechnology area, but now in 2020 there is a for the last 10 years there is a boom in the environmental nanotechnology. Nanotechnology is basically not a new area. Basically it is with us from the very beginning, but when we consider any particular manipulation modification in term of technology, we develop some we do fabrication and all that, we develop some technological application, then we can consider as a technology. So now we are moving towards nanotechnology from the biotechnology. Biotechnology we cannot understand separately with the nanotechnology, because nanotechnology is one step ahead from the biotechnology. So those who are from the biotechnology background, they can easily understand the nanotechnology also. Basically, if I talk about the nanotechnological work in my department, so there are 5 students completed their PhD work on the different aspects of the nanotechnological application in the environmental sciences. Basically, nanotechnology is very much useful in the cosmetics, in pharmaceutical, in medicine sector, and in other electronics sectors also from the very 90s. But in environmental science, nanotechnology is a very much interesting to find out the solution, how we can use the nanotechnology for the different application aspects in the environmental science. So it is a very interesting subject. Those who are from biotechnology background and are very much interested to contribute something in environment, because environment is very much not very much important area where we have to focus on that. As you all are very much aware that due to corona, now the many private sectors, many government sectors are working in this area to find out the vaccines. So again, what is the role of biotechnology? So basically ultimately hum, whatever we can do from our developmental aspects, we are totally depend upon our nature. So again, if we are trying to find out some vaccines, there are many companies trying to find out the vaccine from the natures also, because as you are seeing that nature has a capacity to self-sustain. So now you all are seeing that from the last 6 to 8 months, due to just a small coronavirus, all the human beings are stuck at their homes. So this is the nature. We are facing the different crisis because of our anthropogenic activities in nature, and because of we are disturbing lot of our environment. So we can say that this is a one of the in term of punishment ki nature is giving to human being, because in the name of the development we are doing so much activities to disturb our environment. We are destroying the nature, we are playing the nature, playing with the nature. So anyhow, we have to conserve our nature, we have to protect our nature, we have to protect the environment, because we are depend upon the environment, and we are totally depend upon environment from the very basic needs, like roti, kapda or makan. All these three things, we are totally depend upon the nature, but for the need, we are totally destroying our nature. It's not a need, it's a greed basically. So basically when we talk about the sustainable development, as you are also aware that sustainable development is one of the very important role, important agenda uh, during this environmental conservation. So when we talk about the different area, so in that term we have to talk in the way of the sustainable development. If we are using any technology, so we have to consider the sustainability of that technology. So basically, why I am talking about this, because when we are using the biotechnology aspect, when we are using nanotechnology, so at the same time we have to think about the sustainable development. We have to think about the sustainability of that. So there are a lot of advancement is going on. Now you can see that there are a lot of development in the sector of electronic items. Every person has a mobiles,
and after 1 year, 2 years, when a person completed their use, they just dump off that particular electronic item in the environment. So what is the fate of that electronic discard material into the environment? So ultimately we are just trying to dump off all the material into the environment, and after some time, because those material are not degradable in the environment, so this way the whatever waste we are generating against the waste come to us in the form of different diseases. So not much taking about the environmental aspects. If we can tightly go, sorry, I'm not able to. Yeah. So as my today's topic is role of nanoformulation in the agriculture sector. As you all are agree with me that agriculture is part of environment, and we are very much depend for our daily nutrition on the agriculture product. So how we can link this agriculture sector with the new technology, which is nanotechnology. Biotechnology means using the biological thing, maybe plant, animals, microbes, to develop a particular technology. But what is nanotechnology? Have you heard about nanotechnology before that? Can anybody answer me? Dr. Megha, is it that if I asked any question in between and a student can Yeah, ask yeah. the... Sure, ma'am. It would be great if it will be a two-way communication. Yeah. Yeah. So anybody is aware about the nanotechnology? What is nanotechnology? Have you heard about this terminology before? Yes, ma'am. Yes, Yes, please. Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes. Can you give me definition of nanotechnology? Or can you give me any example where you seen the nanotechnological application? You can voluntarily answer me. Otherwise, I will take your name and you can answer me. Anvisha, are मैम you there? Yeah. Yeah, please. मैम जो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इप्को ने अभी फॉर्मुलेशन बनाकर जो बायोफर्टिलाइजर तैयार किया है, जो नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पर है. Acha, can you tell me one biotechnological application for the environment? Because you all, most of the students are from biotechnology background. So can you give me one example, biotechnological application example for environment? Environment के लिए biotechnology का application आप बता सकते हो? Ma'am, genetically modified organism can be produced by biotechnology. Okay. Green revolution. Any other example for the protection of the environment? Nanoparticles production. Nanoparticle production from the biological organisms, right? Organisms, yes, ma'am. Algae, That bacteria. is nanobiotechnology. Nanotechnology can also be used in drug delivery tools. Yes, very much. And biotechnology for the bioremediation, phytoremediation. Have you heard about that? Yes, For the ma'am. degradation of the environmental pollution with the help of biotechnological application. So there are technologies like bioremediation, phytoremediation, by which we can we can degrade the pollutant from the environment. So nanotechnology is one more ahead from the biotechnology. In biotechnology, basically we use the microorganisms and plants to degrade the contaminant from the environment. But in nanotechnology basically deals with the size. It's not a new thing and it's not a very special thing. Later on, I can just discuss with you how this nanotechnology is different from the other technology. So basically, nanotechnology is a scale. It's not anything. It's not. We cannot think that nanotechnology is a particular thing. We can only consider nanotechnology when we talk about a size of particular organism, a size of particular item in the range of 1 to 1 is to power of minus 9 or 1 billionth of the meter. So you can imagine the size of the nano. We can only consider the nanomaterial, nanoparticle
only on the basis of the size of the particular matter. Basically, it's a Greek word meaning dwarf, and the standard definition, if we can consider from as per NNI, nanotechnology is the understanding and control of matter at dimensions of roughly 1 to 100 nanometer, where unique phenomena enable nano applications. So this is the only difference कि nanoparticle is based on the size of the particular material, size of the particular matter, or shape of the particular matter. So there are different size may be considered from the 1 to 100 nanometer, and the shape can be vary, one dimensional, two dimensional, and three dimensions also. So there are different size, and again the one main important considerable point is that each nanoparticle will have a novel property, will have a novel application. So this is the difference between how nanoparticle or nanomaterial is different from the other microorganisms or other particles. So if we see the history of the nanotechnology is not a very new. 2100 year ago also sulfide nanocrystals used by Greeks and Romans to dye here, and there are a lot of historical development like in 1959 there is a plenty of room at the bottom. It is by R. Feynman, who was the father of the nanotechnology, and in 1974, nanotechnology term used first time. So you can see the development growth of the nanotechnology area. And in 1981, IBM developed scanning tunneling microscope. As you know, with the help of the microscope we can identify the particular matter up to the micro size. Okay, but there are a lot of advancement instruments are also there by which we can identify the shape and the size of the particular nanomaterial. For example, we have a lot of instrument like SAM, TAM, FTIR. There are a lot of instruments are all available nowadays. By with the help of those instruments, we can identify the particular shape and size of the particular nanomaterial. So after seeing this all historical development of the nanotechnology, you can see that in 2000 there was a national nanotechnology initiative launched, and now there are different nanotechnology boards are there, where there different groups are there to focus on the different aspects of the environment also, for nanotechnology mission for the wastewater treatment, nanotechnology for the agriculture sector. So there are a lot of after this national nanotechnology initiative, lot of developmental activities are going in the different phases, and they are trying to find out the solution with the help of the nanotechnology. So you can see in this picture that nanotechnology is nothing a new subject. It is with us from the very beginning, and we can only consider the size of the particular matter. In this, you can see the example like DNA, virus, bacteria. All these are under the nano size also. Micros we can also consider as at the size of the micrometer, or but when we consider, when we talk about the nanotechnology, we have to focus on the size of the nanomaterial, and it may be between the 1 to 100 nanometer only. Then only we can say we are developing the nanotechnological application, because every time when we use the nanotechnology word, we have to focus on the particular size of the nanomaterial. Also, you can see the different nanoscale size of the different uh, things, like atom are also considered under the nanometer. 1 nanometer size is there. DNA is also 1 nanometer size, and the carbon nanotubes are under the 5 to 10 nanometer scale. And there are other like grain or sand is also considered as a 1 micrometer, and red blood cell are also considering under the 10 micrometer. So there are the different size. So based on the size, basically when we talk about the nanotechnology, we can consider only the size of the nanomaterial, nanoparticles. So it's not a new thing.
nanotechnology is not a very new. If I can give you the example, then in our ancestors are also using nanotechnology. As a very basic example, if you can consider, you turmeric, you all know about that. You know about the turmeric? Yes, ma'am. Turmeric, Yes, ma'am. have you seen the raw material of the turmeric? Yes, ma'am. What is the raw material of turmeric? It's like अदरक, ओके, गिंगर. तो आप वैसे तो उसको यूज नहीं करते हो, तो क्या करते हैं उसको, हम लोग क्या करते हैं, गिंगर को क्या करते हैं, या टर्मरिक को ग्राइंड हम क्या करते हैं. ग्राइंड करते हैं, एंड वी Powder form. यूज, यस, वी यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर. तो यू कैन अंडरस्टैंड, when you use the powder, then you can say that you are using the nano particle, because the haldi powder can be considered under the range of the nano particle. Okay, so the nano range, we can consider the haldi powder as a natural nanoparticle. Okay, so if we see about the nanotechnology, so nanotechnology involves the manipulation of matter at nanometer length एंड स्केल टू प्रोवाइड न्यू मटेरियल. अभी आपने को मैंने एग्जांपल दिया था कि हल्दी को जो आप एक गांठ है, you just transfer that particular gant into the powder, then you have converted that haldi powder from the bulk material, right? आपने बल्क मटेरियल से पाउडर फॉर्म डेवलप किया, तो यू हैव कन्वर्टेड द साइज एंड शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. एक बल्क मटेरियल था जो हल्दी की गांठ थी, उससे आपने कन्वर्ट किया उसको पाउडर फॉर्म में, तो यू हैव कन्वर्टेड द बल्क मटेरियल इनटू द नैनो मटेरियल, एंड बाय दिस वे द नैनो मटेरियल का साइज चेंज हो गया, एंड द क्वालिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो चेंज्ड. So when you use the powder form of the turmeric, you will get a efficient and immediate effect of that particular nanoparticle, because of the quality of that particular nanoparticle. When you consider the nanoparticle, then the nanoparticle, due to surface area and volume ratio, the characteristic, the quality enhanced. So this is the only difference from the bulk material to the nano material. Yes, And ma'am. nano Ma'am, material, we reduce the yes, size of the. Yes, yes, ma'am. We reduce the size, so surface area also yes, सरफेस increase. एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाएगा. वो बढ़ने से क्या होगा कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपका इनहेंस हो जाएगा, राइट? तो दिस इज द Yes, थिंग कि ma'am. हम जहाँ पे बल्क मटेरियल यूज कर रहे हैं और हम यहाँ पे नैनो मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो वी विल गेट अ गुड रिजल्ट व्हेन वी यूज द नैनो मटेरियल. ओके, so basically creating and using structured devices and systems that have novel properties. Why I am talking about the novel properties? Because when you see the difference between the bulk material utilization in comparison to the nanomaterial utilization, and you can easily get the result, and you can compare the effect of that particular bulk material or nanomaterial. So there is a novel properties of any particular uh, nanomaterial. So basically nanotechnology has gained intense attention in the recent year due to its wide application in several areas, like in medicine, medical drugs, catalysis, environment also, energy and materials. Lot of development is going on in the sector of nanotechnology, and those nanoparticles with small size to large surface area and have several potential functions. So there is no doubt that we have a lot of potentials we can use by using the nanoparticles, nanomaterials, and the large surface area offered by the teeny nanoparticles, which have high surface area, makes them attractive to address challenges not met by different control method. So the only thing, by using nanotechnology, we can control, we can manipulate the size, we can modify the shape of it. This is the only benefit for using the nanotechnology, that as per our requirement we can develop the nanoparticle, or we can develop the nanoparticle as per our requirement, right? We can develop the nanoparticle as per our requirement. The size we can fix, the shape we can fix. So this is the only positive aspects of the nanotechnology.
एक्सक्यूज मी मैम, यस यस मैम तो बल्क मटेरियल है, अगर हाँ उसकी प्रॉपर्टी जो मैम बल्क मटेरियल से हमने नैनो पार्टिकल बनाया है, हाँ हाँ तो मैम बल्क मटेरियल की प्रॉपर्टी उससे अलग कैसे हो जाती है? क्योंकि जब आपकी बल्क मटेरियल है तो उसका जो प्रॉपर, अभी आप हल्दी है, हल्दी को अगर आप डायरेक्ट हल्दी को आप पानी में डाल के उसको अगर बॉईल करते हैं तो उसका अलग मतलब उसको टाइम लगेगा थोड़ा, और उसका थोड़ा जो कलर आएगा वो इतना सफिशिएंट, इतना कलर नहीं आता है। आप ये बहुत प्रैक्टिकल से एग्जांपल है जो अपने घर में करके देख सकते हो, बट उसी को अगर आप पाउडर करो तो पाउडर आप एकदम पानी में मिलाओगे तो इमीडिएटली वो मिक्स हो जाता है, राइट। ये बहुत एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हाँ, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप इसको अपने घर में भी करके देख सकते हो। अभी इन द केस ऑफ मेडिसिन, अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप कोई भी चीज सपोज फॉर एग्जांपल हर्बल मेडिसिन की बात करते हैं, हर्बल मेडिसिन यू आर एबल टू नो दैट कि लॉट ऑफ हर्बल मेडिसिन आर देयर, लाइक तुलसी ऑल्सो। तुलसी को आप डायरेक्ट अगर लीव्स को कंज्यूम करते हैं तो तुलसी का पत्ता अगर आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं उसका जो इफेक्ट होता है वो स्लोली वो रिएक्ट करेगा, बट अगर अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं तो वो इमीडिएटली आपको उसका इम्पैक्ट दिखता है। अभी बहुत सारी अभी अभी आपने देखा होगा बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए हैं, तो आपको नीम के भी कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तुलसी कैप्सूल और अवेलेबल है, इवन ऑलिवेरा कैप्सूल्स आर आल्सो अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हैं? ये सब नैनो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। जो भी आपका बल्क मटेरियल है उसको नैनो में कन्वर्ट करके ड्रग डिलीवरी या मेडिसिनल उसमें आपको इसका एप्लीकेशन दिया गया है। अभी आप मेडिसिन देखें, मेडिसिन का कंपोजिशन आपने कभी देखा है? हैव यू सीन एवर सीन द कंपोजिशन ऑफ मेडिसिन? नो मैम। कभी Yes, आपने नहीं ma'am. देखा? Sometimes. सो नेक्स्ट Sometimes. टाइम ma'am. ओके, Yes, नेक्स्ट टाइम ma'am. जिसने नहीं देखा है, Yes, नेक्स्ट Yes, टाइम ma'am. ma'am. जिसने नहीं देखा है, नेक्स्ट टाइम आप जब मेडिसिन लेते हैं तो उसका कंपोजिशन देखिए। तो अगेन देयर इज अ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। तो एक ही मेडिसिन में एक ही एलिमेंट रहेगा ऐसा नहीं होता है, तो जो उसके कंपोनेंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और वो जो कंपोजिशन करके बल्क मटेरियल बन रहा है आपका। एक कैप्सूल का साइज या एक मेडिसिन का जो साइज है उसको अगर आप उसको नैनो में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म से मिक्स होकर के हाइब्रिड करके वो आपको एक मेडिसिन की टैबलेट या मेडिसिन कैप्सूल में मिलता है, राइट। अगर आप उसको देखोगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे नैनो रेंज में उसमें कंपोजिशन जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला करके उसको हाइब्रिड करके वो आपका मेडिसिन तैयार हुआ है। तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि जो आपका नैनो टेक्नोलॉजी है ये कोई टेक्नोलॉजी एज सच हम इसको कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज इसका हम एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं, और इसको हम बहुत सारा इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। So but it is already available in the nature from the very beginning. So अभी अगर आप एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स मार्केट में आ रहे हैं, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो उसमें बोलते हैं ना पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर में कि इसमें कार्बन नैनो ट्यूब है या कार्बन है इसमें। आपने सुना कभी कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट में देखा? कभी कभी ध्यान दिया आप लोगों ने Yes, ऐसे किसी ma'am. एडवर्टीजमेंट में? Yes, मैम ma'am. यस, तो क्यों Yes, ma'am. क्या तो है फेस वॉश। फेस वॉश में आता है कार्बन, तो कार्बन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, जो पॉल्यूटेंट मटेरियल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो इस तरह Yes, यस, ma'am. तो इस तरह से बहुत सारे यस चारकोल भी अभी यूज होता है। तो बहुत सारे ऐसे नए नए डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हो रहे हैं, और हल्दी एज यू ऑल नो इट इज ऑलरेडी यूज्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब आपकी टर्मरिक क्रीम वीको टर्मरिक आती है उसमें हल्दी का पेस्ट होता है। अभी आपने पूछा कि डायरेक्ट हम क्यों नहीं हल्दी यूज कर सकते हैं, बट जब आप हल्दी को डायरेक्ट यूज करते हैं उसका इफेक्ट आपको अलग मिलता है। जब आप उसको बल्क मटेरियल से कन्वर्ट कर देते हैं नैनो साइज में एंड देन यू कैन यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और यू इन द फॉर्म ऑफ द पेस्ट, तो उसका आपको इफेक्ट अलग मिलता है। तो जस्ट टू इनहेंस द इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बल्क मटेरियल वी कैन कंसिडर द नैनो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। ओके, so after knowing that about the nano material we can understand the nano material
into three categories. We have organic nanomaterial, we have hybrid nanomaterial, and organic. It's all based on the composition of that elements. We can consider the different type of organic nanoparticles. अभी नैनो पार्टिकल्स का समझ में आया ना आपको? नैनो पार्टिकल्स मीन्स नैनो एंड पार्टिकल. Yes, ma'am. जो Yes, भी ma'am. पार्टिकल, yes, whatever the particle is within the range of nano, we can consider as a nanoparticle. Okay, so what are the approaches to get the nanoparticle? So basically we can consider two particular approaches. One is top bottom and another is bottom up. So in the top down we can, जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको, हल्दी की गांठ से हल्दी को पाउडर में कन्वर्ट करना, दैट इज टॉप डाउन. मीन्स कि वी आर कन्वर्टिंग द bulk material into the powder form or into the nano scale, that is top down material. And still nowadays this particular approach is in very much used, but the bottom up approach is still in the research, and lot of research is going on in this particular area, bottom up approach, where manipulation of the organic and inorganic matter at atomic and molecular scale. So by using the nanoparticles at that particular level to manufacture or to prepare particular device, particular nano material up to that particular size. So अभी अगर आपको एग्जाम एक छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स को मिला करके बड़ा कोई चीज डिवाइस बनाना, दैट इज बॉटम अप अप्रोच. और जहाँ पे बल्क मटेरियल से आपको छोटे छोटे पार्ट में करके नैनो स्केल में लाना, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच. So these are the two approaches where we can get the nano particles. So basically why we are talking about the nanomaterial when lot of technology is available, and different areas, nanomaterial is new for the environmental science, new in the field of agriculture science, but nanotechnology is very much used in computer science, in electronic sciences, in other sectors from the very 18 and 19s. So the same properties making nanomaterial so interesting can them potentially harmful. So the basic characteristic of the nanomaterial is it enhances the reactivity, as I earlier told, and it increase the surface to mass ratio. अभी बल्क मटेरियल आप खुद घर के एग्जांपल में, बिकॉज बेसिकली आई एम लिटिल बिट अवेयर अबाउट दैट कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस चीज़ पे बहुत फोकस करते हैं. पहले एक नारा था हमारे पास, जय जवान जय किसान, फिर आया जय जवान जय किसान जय विज्ञान. नाउअडेज जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान. So you can also do small experiment at your home, and you can develop very big impact to the society. Like example, मैंने भी आपको जो example बताया कि आप नैनो टेक्नोलॉजी को घर में भी यूज करके देख सकते हो कि उसका रिएक्शन किस तरह से आ रहा है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं. तो दिस इज नैनो टेक्नोलॉजी इज अ वेरी मच इंटरेस्टिंग कि आप इसमें कुछ ऐसी चीज फाइंड आउट कर लो जो कि बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है फॉर अवर प्रेजेंट जो टाइम है उसको उसमें यूज करने के लिए. Not many companies are very much towards the developing vaccines and other medicines. अभी आपने देखा during time of corona, lot of Ayurveda medicine is in the use. Like आप कौन सा कवत काढ़ा is basically a herbal mixture of 2 or 3 4 herbs, right? So we are consuming that herb in the form of powder. So again you can develop some this type of kadha, or develop some skill. You can develop something at your home only by using some nanotechnological application, because nanotechnology it is not the only thing you have to check the size, but otherwise you can consider the small size, and then if you are able to find out that this size may be under the nanoscience, you can nanotechnology, you can develop any particular technology for at your home also. So these are the some basic properties of the nanomaterial or particle. So as you all think that maybe there are some question in your mind also, that how can this small science have such a big impact? As I have given the example of medicine, cosmetics, and
Yes, yes. Anybody is saying something? No, ma'am. Okay, so there are a lot of areas where nanotechnology is doing miracle, and it's a good. Now there is a advancement in the sectors of drug delivery. Nowadays there is no need to go for the big operation, and you can also, with the help of the nanotechnological instrument, you can identify the particular damaged area, and you can just जैसे drug target delivery बोलते हैं, वो जो target आपका पोर्शन है वहां पे जाके उसको जो भी है उसको वो पूरा बॉडी आपको नहीं ऑपरेशन करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर जगह पे ही जाके ड्यू टू सम विद द हेल्प ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन advanced tools, one can do this type of things in the medicine. Tissue culture also, there are a lot of advancement in the tissue culture field. And so today we are focusing on the role of nano formulation in the agriculture sector. There are other sectors also where the nanotechnology is doing very much good, and there are a lot of advancement, but today we are focusing on the nanotechnological aspects in agriculture, how the nanotechnology is uh, in playing role in the agriculture. So basically, as nature is the very first food, are you agree with me or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, So ma'am. our Yes, growth, our ma'am. yes, our growth and our development is totally depend upon the nature. And nature, agriculture sector is one of the most important area where we are depend for our daily nutrition. अभी fruit plants भी हैं, but we cannot depend upon fruits only, because we have to get other nutritions also from. We can use the agriculture products like cereals, rice, wheat, and all these. Okay, for daily routine food purposes. So all foods, whether natural or processed, contain nanoparticles. अभी आप सोचोगे कि एग्रीकल्चर फूड में नैनो पार्टिकल कहाँ से मिल रहे हैं हमको? सोचो, कैन एनीबडी गिव मी आंसर? In agriculture crops where you are getting nanoparticles? Okay, the example is in front of you, that natural products that contain nanoparticles include milk and meat. Milk contains caseins, a form of the milk protein present at the nanoscale, and meat is made up of protein filaments, which is also very much less than the 100 nanometer thin. So again, every day we are consuming the nano particle material in the form of nanoparticles. So nanoparticle is not a new, it is already available in the nature, and we are consuming nanoparticles in our daily routines basis. So agar if we talk about the sources of the nanoparticle, what are the sources? What do you think? What are the sources of the nanoparticle? As you understand the nanoparticle, so is there any idea? Do you know about that? What is the source of nanoparticle? phosphate. Yes. What are जिससे the से source? नैनोफॉस्फोरस बनाते हैं. What are the sources of nanoparticles? Okay, I will tell you. There are three types of sources by which we can get the nanoparticles. Nanoparticles is in the range of the nano size only. So don't be confused. I'm talking some very big thing. So basically, one is the natural source. Natural source means we have a sand, soil, clay, lot of things available in the nature. Okay, so we can get the natural nanoparticles from the nature, and sometimes anthropogenic natural nanoparticles also with by accidents. For example, आपका ये जो वॉल्केनोज हैं, स्टॉर्म्स हैं, इन सब से भी कई बार हमें नैनो पार्टिकल्स, जो जो भी नैनो पार्टिकल्स में वट एवर द मटेरियल इज देयर इन द रेंज ऑफ द नैनो साइज.
सो आपका स्टॉर्म में आता है जो आपके ये धूल के जो कण होते हैं वो भी आपके नैनो साइज में होते हैं. यू कैन कंसिडर क्ले एज अ नेचुरल नैनो पार्टिकल. फिर जो आपका ये गाड़ियों से धुआं निकलता है कार्बन, वो भी नैनो पार्टिकल की रेंज में है. Or sometimes, so there are three types of the sources of nanomaterial. One is a natural nanomaterial, one in anthropogenic we will get with the by the accidental way, and the third is the manufactured or engineered nanoparticle. Engineered nanoparticles means when we are trying to develop the nanoparticle as per our requirement, we can consider those nanomaterial as a engineered nanomaterial. So it is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. so could you please brief me what is the type of the natural type of the nanomaterial, source of the nanomaterial? Sorry, what are the source of nanomaterial? Natural, Yes, engineered nanoparticles. yes, and natural. and anthropogenic. Yeah, Natural and anthropogenic and engineered yes. nanoparticles. Yes, ma'am. So we can get the nanoparticles from three types of so natural nanoparticle which is already available in the nature, like we have given example, healthy example, and lot of other examples are also available. Clay, dust particle, or anthropogenic with the disturbance, when we create the disturbance, and sometime accidental we can storms, cyclones, and all this. So there are three types of we can by three ways we can get the nanomaterial. There are some examples also, like protein, polysaccharides, casins, lactose, fats. All are you can consider as in the size of nano. So now coming to the point that how this nanotechnology in agriculture. Now it is very much important area, how this nanotechnology we can use in agriculture. So when we are talking about the agriculture, what is your imagination? Can anybody share with me what is your imagination when you're talking about the agriculture sector? That, ma'am, by using the nanoparticles or the nanotechnology, we No, can target the yeah, yes, we can yes, target the disease which is caused by the insects or pests in the yes, agriculture field. yes. So basically, nanotechnology is an emerging and promising field of interdisciplinary research and open up a wide array of the opportunities in different sectors, including medicine, pharmaceutical, electronics. As I have already discussed earlier, that there are a lot of scope in different sectors. But in agriculture sector, it could be used for the insects pest management through formulation of nanomaterial based pesticide and insecticide, and also enhancement of the agriculture productivity using bioconjugated nanoparticle, or especially for slow release of nutrient and water. So basically, why there is a need of using nanotechnology in agriculture sector? Can anybody highlight on this? Why this nanotechnology is in demand in the agriculture sector? What is, hello? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Ma'am, is it because most of the herbs have low bioavailability, yeah, and that is why if they are incorporated in some carriers by using this nanotechnology, the yes, bioavailability can be increased. yeah, very right. The one example I'm just giving to you. For example, in the agriculture sector, we are using pesticide, right? Pesticide is basically to, pesticide is for what? Ma'am, to get Pests. resistance from the Trigger the pest. Yes, pesticide. but are you able to identify that when we are using the pesticide is basically to kill the pest, which is very much harmful for the particular crop. But when we use pesticide, sometimes what happen, a particular pesticide when we use, the targeted pest
is going to kill with the help of the pesticide, but at the same time, the other important pesticide also kill due to that particular pesticide, right? Yes, ma'am. Yes, Yes, So, ma'am. ma'am. or maybe sometimes, maybe what happened ki due to this particular pesticide, um, apart from the targeted pesticide, there are some other pesticide also killed by the pesticide, but maybe those pesticide may be useful for that particular agriculture crop. It might possible, right? So, but when we are using the pesticide, we are killing the pest, those who are not useful, those who are harmful for that particular agriculture crop, but at the same time we are killing the pesticide those who are beneficial to the particular crop or maybe beneficial for the other associated plant, right? So this is the negative aspects of the pesticide when we are using for the agriculture purposes. And as you are biotechnology students, you are also very much aware about that when we use pesticide, so pesticide is in the environment up to long time. So pesticide is not going to degrade from the environment, and persistent pesticide, it may be persistent up to the long time in the environment. So what happened when we are by slowly our fertility of the agriculture field is decreasing with the by using the pesticide. So with the help of nanotechnology, we developed the some formulation of nanopesticide, nano insecticide, so that with the help of the nanotechnology in the agriculture, we can only target the particular pest, not the overall pest. We can only target the particular pest which is harmful for the particular agriculture crop. So by this way, we can save the other pesticide which is beneficial to the to the other agriculture crop or maybe some associated agriculture crop. So with the help of the nanotechnology, with the help of the nano formulation of pesticide, insecticide, or herbicide, we can only target, we can only degrade, we can only kill the pesticide which is harmful for that particular crop. Is it okay? So there is a need of formulation of the nanomaterials based pesticide and insecticide. वैसे भी आजकल केमिकल पेस्टिसाइड बहुत यूज हो रहा है जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप खराब हो रही है. उसके लिए एक स्टेप आगे हुआ जब आपने बायोटेक्नोलॉजी यूज किया. बायोटेक्नोलॉजी में हमने बेसिकली फोकस किया कि हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज करेंगे या फिर हम ऑर्गेनिक हर्बल मतलब बायो बेस्ड कंपोस्ट यूज करेंगे. बट नैनो टेक्नोलॉजी इज वन मोर स्टेप अहेड by which we can use the formulated nano material in the form of nanopesticide, nanoinsecticide, so that we can target only the harmful pesticide or harmful insecticide for the agriculture crop. So, ma'am, basically, it is a target drug delivery system. Yeah, it is the same. For example, Yes, अगर आप ड्रग डिलीवरी में आप करते हैं टारगेट ड्रग्स जो है वो पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आप यूज करते हैं, पूरे उसके लिए नहीं यूज करते. सेम एस यहाँ पे भी आपको सिर्फ टारगेट के लिए यूज करना है. एग्रीकल्चर में भी आपको सिर्फ टारगेट के लिए यूज करना है कि हम जो भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उससे सिर्फ हमारा वही इंसेक्ट किल होगा, बाकी इंसेक्ट किल नहीं होंगे. ओके. सो दैट कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स बेनिफिशियल पेस्ट होंगे, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होंगे जो कि उस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए यूजफुल हो या ना हो, बट जो एसोसिएट क्रॉप्स होंगी उनके लिए माइट पॉसिबिलिटी यूजफुल हो सकते हैं, तो वो किल नहीं होंगे. So this is the one particular plus point of using a nano-formulated pesticide or insecticide. So basically जो आपने बात की वो यहाँ पे आ रही थी कि नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर से कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. तो नैनो पार्टिकल entrapment of drug allows their enhanced and prolonged delivery to or uptake by target cell and on or reduction of toxicity compared to the equivalent free drugs. So already in drug delivery system में this particular nanotechnology, nano formulation is very much used and useful in drug delivery or medicine sectors, but in environmental sector, in agriculture sector, it is little bit new. It is not more than decades only. So this same concept can be used in agriculture as well. The same concept which is used in the drug delivery system
this particular system is also useful in the in the agriculture sector. Nanoparticles have a highly reactive surface, therefore they are biologically active themselves, and some nanoparticle containing products aimed at agriculture use are already in the market. So already last 10 years से जो development हुआ है environment sector में और agriculture sector में, so there are some products already available in the market like nano pesticide, nano herbicides also there, and nano insecticide is also there, and some fertilizers are also available in the market, nano urea if you heard about that. So there are some advancements, some advanced application, advanced product is also available in the market. So there is a lot of scope for youngster to think in this particular area and to develop something to go ahead for the technological application part in the environment sector as well as in the agriculture sector. These two sectors are very much important, and I think as a biologist, as the environmentalist, I am just considering that कि जो हमारा आने वाला टाइम है वो हमारा बहुत ज़्यादा नेचर बेस्ड है, हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को नेचर के साथ लेके चलना है, तो हमें नेचर में रह के नेचर के ही सॉल्यूशंस को निकाल के नेचर के साथ ही आगे चलना है. तो this is the scope for you all that you think about in this particular area. As you all the student of the biotechnology, you have very much aware about the technological application, technological aspect, so you can just add on this nanotechnology area, and you can try to develop some some this type of application aspect, so that we can utilize this particular application for the environmental or agriculture sector. We can enhance the productivity, we can develop some this type of pesticide or maybe some insecticide by using some herbal product. Not, it is not necessary that we are using chemical compositions only. We can also use this plant material also for the nano formulations. If I can give you one example, have you heard about the neem plant? You are aware? So neem plant को अगर हम neem plant as such leaves को क्रश करें, उसको नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करें, उसको सॉइल में मिक्स करें, या हम उसको जो हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है उसमें मिक्स करें, तो कैन इट वर्क एज अ नैनो मटेरियल फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर? कैन इट वर्क? Yes, ma'am. I think so. Yes, ma'am. Yes, very true. So जो नीम प्लांट है, नीम प्लांट इज वेरी मच यूजफुल फॉर सम पर्टिकुलर पेस्टिसाइड्स, राइट? आपको अगर आप लोग मतलब अपने जो आपके घर पे सीनियर सिटीजन्स हैं, कभी आप उनसे बात करेंगे तो दे कैन ऑल्सो इन्फॉर्म यू दैट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेन्स एट होम, जो उनके पास जो मिट्टी का एक घड़ा होता था उसमें वो लोग नीम प्लांट्स डालते थे, राइट? तो नीम लीव्स डाल देते हैं, तो नीम लीव्स डालने से क्या होता था, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स और जो छोटे छोटे कीड़े आते थे वो नहीं आते थे. और अभी हम क्या डालते हैं, अभी हम केमिकल्स, हम अभी हम कॉकरोच मारने के लिए यूज करते हैं डिफरेंट जो हमारे पास स्प्रे होते हैं. ऑल दीज आर केमिकल्स. When you are spraying the particular spray for killing the particular mosquito or maybe insects, at the same time, are you thinking that you are also inhaling the same particular chemical? Is it right or not? When you are spraying, any particular chemical spray to kill the insects or to kill the mosquito at your home, at the same time you are also inhaling the same spray. So you are playing with your health because you are inhaling that particular spray, right? So instead of using the chemical insecticide, chemical pesticide, it is very much uh, advisable to use the herbal this type of pesticide, or maybe there are a lot of traditional knowledge are available with our senior citizens, but nowadays we are you know in the term of a modern society, modern agriculture concept, modern urbanization and all that. So we are little bit, we are forgetting our traditional thing and we are focusing on the modernization. But still that uh, with the linkage of the traditional knowledge and the advanced application, we can develop something in that particular area so that we can save our traditional knowledge, and in addition we can do some advancement in term of technology and we can develop something. So in this area we can we can develop our skill and we can come out with some solutions for the environment, for the agriculture area.
So basically, all these nanotechnology, all this nano formulation is also available in the form of fertilizer, and sometimes also as a plant growth stimulator, antibacterial agents, pesticide, and carriers of the conventional pesticide also. It is already, a lot of things are already available in the market. So if we see in the agriculture application, so there are a lot of applications are there. For example, agriculture diagnostic, remediation of soil and water, pollution monitoring, sustainable agriculture, nanopesticide, precision farming, nanofertilizers. So there are advancement, there are application available, and research work, R&D work is going on in different sectors. So there is a lot of things we have to do in this particular area, as there are a lot of scope, because there is not much more research R&D activities, and if there is a research activities, but within the laboratory only. So there is a need to develop technology and ultimately transfer of technology from lab to land. This is the basic requirement for working in the R&D in the laboratory. So if we see the agriculture input, basically I am focusing on the fertilizer and pesticide, because I think these two are very much important area, because the pests are very much harmful for the agriculture crops, and pesticide fertilizer is basically for the nutrient purpose, because as uh, we are very much agree that due to lot of chemical fertilizers or chemical pesticides, our agriculture soil is is decreasing, the nutrition quality decreasing day by day. So how we can maintain the nutrient quality in the particular soil, there is a need to think in this particular area how we can use the herbal fertilizers or maybe organic fertilizers for the purpose of the agriculture crops, so that we can conserve the soil nutrient, and we can grow some good healthy agriculture crops, and we can consume the nutrition, good nutrition for our health purposes. So in this, if we can see that when we talk about the agriculture input, then there are nanoparticles and nanobiotechnology. As you can easily understand, the nanobiotechnology, where you are using the application part of biotechnology, already you are using the biotechnology, but when you consider any particular technology within the range of the nano size, you can consider that technology is as a nanobiotechnology. For example, हैव यू आप सबने प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में, पढ़ा है? Yes, ma'am. प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है? व्हाट इज फॉर बेसिकली प्लांट टिश्यू कल्चर? Taking the totipotent nature of callus cells and developing Yes. each plant. Yes. So it is based on the totipotency उस पे. तो उसमें क्या होता है कि आप एक ही पर्टिकुलर सेल से बहुत सारे मोर देन मास प्रोपगेशन करके आप पर्टिकुलर स्पीसीज को बचा सकते हैं, जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, या मास प्रोपगेशन कर सकते हैं, राइट. बट अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो यू कैन सी दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, स्टार्टिंग फ्रॉम द टिश्यू कल्चर लैब टू द एक्लमेटाइजेशन, जब आप उसको बाहर लेके जाते हैं तो देयर इज अ चांसेस ऑफ द कंटामिनेशन, राइट. बहुत सारा कंटामिनेशन होता है, बैक्टीरियल फंगल कंटामिनेशन होता है. बट एट द टाइम ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, जब आप नैनो पार्टिकल यूज करते हैं, नैनो पार्टिकल बहुत सारे नैनो, जैसे आपको मैंने बताया कि नैनो पार्टिकल में जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आप नैनो पार्टिकल्स यूज करके अगर आप एट द टाइम ऑफ टिश्यू कल्चर उसको यूज करते हैं, तो देयर इज अ लेस चांस ऑफ द कंटामिनेशन. Again, this is the one area where one can work in this area, and this is a very new area. One can do something good research work in this area, how nanobiotechnology may be for the may be useful for the plant tissue culture. बिकॉज आप वहाँ पे जब आर्टिफिशियल मीडिया बनाते हैं, उसमें अगर आप नैनो पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं, तो आप अगर आप इसमें पेपर्स पढ़ेंगे, देयर आर वेरी फ्यू पेपर्स इन दिस, so you can easily identify that when you are using the nano particle during the time of plant tissue culture, the chances of the contamination will be very less. So by using nanobiotechnology, there are a chance of the improvement, like target genetic engineering, biomolecule delivery, and all these. And when we are talking about the
agriculture aspect. So formulation is the very main important area. Formulation in the form of nano agrochemicals. Nano agrochemicals. Nano is one part. Nano means the size of the particular material what we are going to use. Agrochemicals, whatever the chemicals we are using for the purposes of the agriculture input. So we have to do optimized dose for that particular by using nano. फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्टिकुलर स्प्रे फॉर किलिंग द पेस्टिसाइड, अगर हम जो हम एक जो पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं अगर हम उसको हर्बल कर दें, फॉर एग्जांपल अगर नीम का प्लांट है, नीम की लीव्स को अगर हम उसके लीव की नीम से अगर हम उसको पाउडर कन्वर्ट कर दें तो नैनो पार्टिकल हो जाएगा. उसको हम अगर किसी चीज़ में मिक्स करते हैं, अगर हम फर्टिलाइजर में मिक्स करते हैं, देन इट कैन ऑल्सो वर्क एज अ नैनो pesticide. So we are formulating the particular pesticide with fertilizers. So this तरह के जो फॉर्मूला आप केमिकल भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम केमिकल को टोटली बैन कर रहे हैं, बिकॉज इमीडिएटली वी कैन नॉट बैन द, बिकॉज प्रोडक्टिविटी भी आपको जो इतना जल्दी हम चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ वेरी बिग सेक्टर. इट्स अप टू द 60% सेक्टर है जो आपका एग्रीकल्चर. वी कैन नॉट रिमूव इमीडिएटली फ्रॉम द केमिकल पेस्टिसाइड टू द नैनो पेस्टिसाइड, नैनो फॉर्मुलेटेड पेस्टिसाइड. तो देयर इज अ slowly we can remove from one particular crop to the other. So by this way, by using the nano agrochemicals, we can increase the nutrition, and we can also use that particular nano formulated pesticide for the protection also, and for the regulation also. So for all these nutrition, protection and regulation, we can use the nano formulated pesticide, fertilizers, and other way we can use the nano formulation for the protection of the plant, for the enhancement of the nutrition in the particular plant. So by so there are a lot of scope of work. This particular chart is very much important. There are a lot of research scope in this particular chart, how we can use nano formulation for different research sectors. So there are a lot of research area is there, how we can use nano formulation for one particular targeted area. Either one can work in the improvement aspects, improvement of the particular species, improvement of the particular nutrition aspects, how we can protect the particular species from the pest and from the other harmful things, and also how we can regulate the plant growth, regulation, heavy metal uptake, because as you all know, plant have a quality to uptake the nutrient from the soil. So whatever the nutrient available in the soil, plant will only uptake those particular nutrient from the soil. So if in our soil the pollutant is available, plant will only uptake the pollutant from the soil. And what will happen, जब वो प्लांट जो प्रोडक्ट है आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर क्रॉप, वो प्लांट जब फूड चेन में जाएगा तो अल्टीमेटली हु विल बी द सर्वाइवर? Human being, because we are going to consume the agriculture crop, right? Yes, it is ma'am. not like, yes, so it is not like that कि अगर agriculture crop में pollutant जो है either by the fertilizer use or pesticide use, हम pesticide डाल रहे हैं, हम वहाँ पे fertilizer डाल रहे हैं just because कि हमें crop अच्छा मिले, crop yield अच्छा मिले, जल्दी मिल जाए. But at the same time we are using chemicals which is harmful for our health. So to reduce the health impact, negative health impact, we have to think about this particular area. And it is not like every time we can develop the nano formulation with the help of chemicals only. There are a lot of, जैसे मैंने आपको example दिया कि natural nano particles are also available, and there are anthropogenic particles, there are engineered nanoparticles. So you can merge engineered nanoparticle with the natural nanoparticle. So you can identify some natural products, those who are very much effective for the pesticide and for the fertilizers. You can with the help of engineered nanoparticle, you can formulate particular product and you can use for the different sectors in agriculture. So there is again lot of scope
you can work in this particular area. It's a very burning area, and it's only decades, so there are a lot of scope in this area to work on that. So sustainable agriculture is needed, as you all will agree with me that the development of the nanochemicals has appeared as promising agent for the plant growth, fertilizers and pesticide. And as in recent year, the use of nanomaterial has been considered as an alternative solution to control plant pests, including insects, fungi, and weeds. And there are several nanomaterials are used as antimicrobial agents also in food packaging, in which several nanoparticles such as silver nanoparticles are in great interest. आजकल आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारा रेडीमेड फूड मिल जाता है, राइट, इन द मार्केट. Have you seen that packed food material in the market? Yes, ma'am. So there are some nanotechnological application in the food sector. So aluminium foil आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पे स्वीट पे भी aluminium foil लगाते हैं. So what is the purpose for that? Small aluminium foil लगी रहती है. आपने देखा होगा बर्फी के ऊपर. Yes. एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी होती है उसमें. Yes, so that is also considered as a nano जो particle उसके अंदर वो जो aluminium foil है, that can be considered as a nano thin layer. So just because की जो silver है वो antimicrobial का काम करता है, और इसके लिए उसमें aluminium की, और there are lot of preservative also जहाँ पे nano particles, क्योंकि अभी नैनो पार्टिकल्स का मतलब ही है साइज. अभी आप बल्क मटेरियल को तो यूज नहीं कर सकते ना किसी फूड पैक को पैक करने के लिए. किसी फूड को पैक करने के लिए आप बल्क साइज में तो नहीं यूज कर सकते. तो नैनो इज बेसिकली कंसिडरेशन ऑफ द साइज ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल. कोटिंग जो डिफरेंट जो पैकेजिंग होती है उस पर नैनो की कोटिंग कर दी जाती है, नैनो मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो जो उसका फूड रहता है वो सेफ रहता है, प्रिजर्व काफ़ी दिन तक रह सकता है. एंड देर आर मैनी नैनो पार्टिकल्स लाइक AgFe, आपका सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, aluminum oxide, aluminum carbon nanotubes. There are many nanoparticles which have been reported to have some adverse effect on plant growth apart from the antimicrobial. At the same time, I'm not saying there are always a plus point. Every coin has a two sides, right? So there is one particular area where is a very positive side which is very much useful in different sector, but at the same time there are some negative aspects also. So if we are talking about the positive application part of the nanoparticle, yes, we have to consider about some negative aspects also, some nanotoxicity effect of the particular nanomaterial. Because जितना छोटा अगर वो होगा, जैसे अभी टॉक्सिक इफेक्ट है, व्हाट इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर मटेरियल? टॉक्सिक मटेरियल्स क्या होते हैं? टॉक्सिसिटी सुनी है आप लोगों ने? Yes, ma'am. क्या होती है टॉक्सिसिटी? Ma'am, which can harm the system. Yes. Yes. So अभी आप यहाँ पे हम बोल रहे हैं these are the nano particle like aluminium, iron, silicon, तो ये सब भी क्या है? एलिमेंट्स हैं. तो इनका अगर आप एक पर्टिकुलर रेंज में अगर आप यूज कर रहे हैं दैट विल बी ओके, बट अगर वहाँ पे वो उनका यूज ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी आपको कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी इफेक्ट हो सकते हैं. ओके, तो वी हैव टू टेक केयर अबाउट द टॉक्सिसिटी एस्पेक्ट ऑल्सो when we are considering the nanotechnological application. So in that way we can say that in modern agriculture, sustainable production and efficiency are unimaginable without the use of agrochemicals such as pesticide and fertilizers. We are very much agree with this that कि आज की कोई भी आपको जो आइदर फूड मटेरियल्स हैं, आइदर सीरियल हैं, व्हीट, राइस, जो भी है, without pesticide, without insecticide or without fertilizers, there are very rare जो प्रोडक्शन बहुत कम है जहाँ पे कि प्योर आपको ऑर्गेनिक फूड मिल सकता है, राइट? और जो ऑर्गेनिक फूड अगर आप कहीं से लेने भी जाओगे तो बहुत कॉस्टली मिलता है. इज इट ओके और नॉट? एम आई राइट और नॉट? Yes, जो ma'am. ऑर्गेनिक फूड होते हैं जिसमें बिल्कुल भी पेस्टिसाइड नहीं होगा या फर्टिलाइजर्स नहीं यूज किया होगा, केमिकल फर्टिलाइजर, वो आपको
सस्ता मिलेगा, बट जहाँ पे भी आपको प्योर आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज किया होगा या आपको हर्बल पेस्टिसाइड यूज किया गया रहा होगा, वहाँ पे आपको उसका जो कॉस्ट होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. बट एट द सेम टाइम we are playing with our health by consuming all these type of food material where pesticide and chemical pesticide and chemical fertilizers are being used. So, however, every agriculture has some potential issue, including contamination of water or residue on the food product that treat the human being and the environmental health. So, ये फूड चेन है, जो भी अगर एग्रीकल्चर फूड हमारे पास है, जो भी उस पर कंटामिनेशन आएगा, जो भी सॉइल के थ्रू या वाटर के थ्रू जो भी कंटामिनेशन प्लांट कंज्यूम करेगा, वही कंटामिनेशन हम वो टॉक्सिसिटी जो है वो हमारे हमारे पास भी आएगी, बिकॉज वी आर द consumers. So again, it will circulate into the biogeochemical cycle. And the development of the high-tech agriculture system with the use of engineered smart nanotools could be excellent strategy to make a revolution in agriculture practices. This is the main point I am focusing on this particular webinar, that we can do lot of research and we can definitely come out with some revolution in agriculture practices. For example, I told you that there are a lot of scope, there are a lot of areas where there is a a lot of R&D is required, because there is not much more work has been done in the area of the agriculture product. How we can use the nanotechnology. It is not like only the anthropogenic and engineered nanoparticle we can use by using chemicals, but some natural nanoparticle. There are some. अगर आप एक एग्जांपल देखें तो if I can discuss with you about the filtration unit nowadays. I think everybody is using the filtered water at home, right? आप सभी घर में फिल्टर पानी पीते हैं और आरओ वाटर पीते हैं? Yes, ma'am. Why you are not using the tap water? टैप वाटर क्यों नहीं पीते आप लोग? या जो हैंडपंप से पानी निकलता है आप पी सकते हो उसको? Ma'am, lots of impurities or contaminants Yes. will be there, ma'am. उसका TDS ज्यादा होता है. यस, तो बिकॉज टीडीएस कहाँ से आ रहा है उसमें? टीडीएस कहाँ से आ रहा है? फ्लोराइड कहाँ से आ रहा है? बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब इंडस्ट्री हुई तो इंडस्ट्री का जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो सारा कहाँ जा रहा है? वाटर बॉडीज में जा रहा है और मे बी इन्वायरमेंट में जा रहा है, तो वो जाके सारा ग्राउंड वाटर में मिल रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट today we are not able to use direct tap water or use the hand pump water, because we are very much aware that the tap water or the hand pump water is groundwater is not pure. So just because of that particular fear we are using the filtered water or RO system का जो water है वो use करते हैं. But are you aware what are the advancement in the filter technology? Have you any idea about the filtration technology? Advancement in the filtration technology? Yes, ma'am. Reverse osmosis is used basically. That is very basic. Reverse osmosis is very basic fundamental concept of filtration. After that, there are a lot of improvement is there. After that, microfiltration, ultrafiltration. Now there is a nanofiltration. Membrane filtration सुना है आप लोगों ने? Membrane filtration technology? Yes, ma'am. Yes. So now अभी जो आपके recent जो अभी filters unit आते हैं, जो आपके जो water purification system है, इसमें अभी membrane filtration use हो रहा है. तो you can consider the advancement, you can think about the development in this particular water purification system. कि पहले सिर्फ हम RO का water use कर सकते थे, but उसके बाद ultra filtration उसमें unit लगी, then micro filtration. Micro से भी आपके कुछ nutrient जो है वो आते थे पानी के अंदर जो आप कंज्यूम करते थे, उसके बाद जरूरत पड़ी उसको और ज्यादा कंज्यूम मतलब और फिल्टर कर दिया, तो अभी आपके पास नैनो फिल्टर्स भी यूज होने लग गए. नैनो फिल्टर की साइज के बाद भी उसमें मेम्ब्रेन फिल्टर भी लग गया है. तो एट द सेम टाइम व्हेन यू आर यूजिंग दिस एडवांस फिल्ट्रेशन यूनिट फॉर द प्योर वाटर, एट द सेम टाइम जब आप इतना ज़्यादा फिल्टर करके पानी पी रहे हो, तो आपको पता होगा कि जो पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट, देयर आर सम न्यूट्रिएंट्स आल्सो अवेलेबल इन द वाटर. When you are going through the process of this filtration, then you are also जो आपका पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है आप उसको भी किल कर दे रहे हो, खत्म कर दे रहे हो, राइट. सो अगेन अगर आप एडवांसमेंट देखो तो देयर आर सम एडवांस वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इज देयर वेयर देयर आर सम बायोसेंसर्स इज देयर, राइट, जहाँ पे इंडिकेट होता है कि
अभी आपका इसके अंदर इतना न्यूट्रिएंट कम हो गया है, देन यू कैन इंजेक्ट द न्यूट्रिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर. Have you seen this type of example anywhere? No, ma'am. Okay, so you can just go and check what is the advancement in water purification system. तो अभी क्या हो गया, कुछ ऐसे recent वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आ गए हैं, एडवांस प्यूरिफिकेशन सिस्टम, जिसमें कि अप टू मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन यूनिट लगा दी गई है, जिसके अंदर उन्होंने कुछ सेंसर्स दिए, बिकॉज देर आर सम बेसिक न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो अवेलेबल इन द वाटर. जब आप इतना लेवल पर उसको फिल्टर करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर के सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो चले जाते हैं. तो पानी के अंदर न्यूट्रिएंट को मेंटेन करने के लिए देयर आर सेंसर्स ऑलरेडी इंस्टॉल इन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, सो दैट जैसे ही आपका न्यूट्रिएंट लेवल कम हो जाता है तो वो जो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है वो आपको इंडिकेट करता है कि इसमें अभी आपका इतना, क्योंकि देखो फ्लोराइड, आई थिंक फ्लोराइड एक कंटामिनेशन है, बट अप टू 1 मिलीग्राम पर लीटर इज ऑल्सो वेरी मच एडवाइजेबल फ्रॉम द WHO, राइट? बिकॉज जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, माइक्रो एलिमेंट्स हैं, मैक्रो एलिमेंट्स हैं, वो आपको ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आप कुछ भी नहीं खाओ, कुछ भी अगर आप नहीं लोगे तो फिर आपकी बॉडी ग्रोथ कैसे करेगी? आप डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हो पीने के लिए? No, ma'am. वाई, क्यों नहीं कर सकते Because, डिस्टिल वाटर? because no ions and minerals are there, यस, ma'am. सो सेम एज अगर आपका एडवांस प्यूरिफिकेशन सिस्टम हो गया है, जिसके के अंदर सारा आपका जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो सारा अगर खत्म हो जाएगा तो आपको पानी में सिर्फ प्यास बुझेगी, बट कोई भी न्यूट्रिएंट आपको नहीं मिलेगा. तो उसके लिए सम एडवांस इंस्ट्रूमेंट, बायोसेंसर, अगेन नैनो साइंस यहाँ पे आ रहा है कि उन्होंने वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने बायोसेंसर्स लगाए हुए हैं, सो दैट बायोसेंसर इंडिकेट दैट the particular nutrient level is decreased up to this level, so you have to inject that particular nutrient to your filter system. तो अगर आपका फिल्टर सिस्टम एक तरफ एडवांसमेंट है कि आप वाटर को प्यूरिफाई करके यूज कर पा रहे हो, बट एट द सेम टाइम देयर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स आल्सो, कि आपका पूरा न्यूट्रिएंट खत्म हो जा रहा है और आपको इंजेक्ट करना पड़ रहा है. उतना ऑटोमेटिक ज्यादा न्यूट्रिएंट. क्या चीज? जब उसमें न्यूट्रिएंट पूरा चला जाता है, मतलब हाँ. तो बायोसेंसर उसको डिटेक्ट करने के इंडिकेट बाद कर, हाँ, आपको इंडिकेट तो करेगा इस, तो उसमें ऑटोमेटिकली इसमें इंजेक्ट हो जाता है. नहीं ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा. जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी आप जब खाना ले रहे हो, खाना खाते हो, तो बिकॉज ऑफ द जो फूड की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आपने देखा मार्केट में कैल्शियम की टैबलेट अवेलेबल है, आयरन की टैबलेट अवेलेबल है, विटामिन की टैबलेट अवेलेबल है. तो सब लोग आजकल क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ डिफिशियंसी होती है, देन दे आर कंज्यूमिंग द टैबलेट्स, राइट? ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? जस्ट टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी. तो सेम वे में अगर आप पानी पी रहे हो, तो पानी में भी अगर आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो आपको फिर उस पानी में वो न्यूट्रिएंट मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट कि आप वो न्यूट्रिएंट अपने बॉडी में ले सको. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे स्कोप हैं जहाँ पे आपको एक तरफ एडवांस डेवलपमेंट हो रहा है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट किसी भी डेवलपमेंट में उसका साइड इफेक्ट होता है जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए. तो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर देयर आर लॉट ऑफ स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट सेक्टर, but at the same time we have to take care of the toxicity and the side effect of the particular technology. So basically nanotechnology has the perspective to improve the agriculture and food industry with novel nano tools for the controlling of rapid disease diagnosis. जैसे अभी मैंने बताया आपको कि उसमें बहुत सारे बायोसेंसर्स होते हैं, तो बायोसेंसर्स आर बेसिकली टू इंडिकेट द पर्टिकुलर लिमिटेशंस कि उसके अंदर कितना होना चाहिए, कितना रह गया है, सो दैट यू कैन जस्ट इम्प्रूव दैट. So enhancing the capacity of plant to absorb nutrient among the others, and the significant interest of using nanotechnology in the agriculture sectors include specific application like nano fertilizers and nano pesticide. Basically we are focusing, but there are other areas also where we have to take care of that and develop some skill, develop some technology to take care of that particular area. And no doubt that sustainable growth of agriculture totally depends on the new and innovative techniques like nanotechnology. Because biotechnology में हमने यूज़ किया, बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स यूज़ कर लिए, बट स्टिल जो आपका बायोटेक्नोलॉजिकल वो है उससे भी हमें आगे बढ़ के अभी और कुछ यूज़ करना है. बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी
आपने यूज किया फॉर एग्रीकल्चर? कैन एनीबडी जस्ट brief me about what are the biotechnological applications we are using for the agriculture sector? Ma'am, flavor, Nano, Which technology? लाइक अभी आपने बताया ना GMOs है, और उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के थ्रू हम बहुत सारी वेराइटीज हमने बना ली हैं, बहुत सारा ma'am, हमने, flavor tomato. यस बहुत सारी हमने किया है. बट अगेन अगर आप देखो तो जो हमारा BT कॉटन था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, आई कि नहीं आई? तो और रेमिडिएशन पार्ट में भी अभी बायो रेमिडिएशन की हम बात करते हैं कि बायो रेमिडिएशन इज अ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन फॉर द रेमिडिएशन ऑफ द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द कंटामिनेटेड सॉइल. बट अगेन बायो रेमिडिएशन is a very complex technology because it is very much we are very much comfortable to um, identify in the laboratory which particular microorganism is for the degradation of particular contamination. But it is very much tedious work when we are doing experiment in the field because in the field it is not so easy, because in the field there are a lot of complexity is there, lot of not only single microorganism is there, lot of microorganisms there, and there are a lot of enzymatic activities there from one particular enzyme to particular microorganism. So it is very difficult to identify the particular microorganism in the field, which particular microorganism is suitable for the decontamination of which particular contamination. So again, it's a very much big challenge for in the biotechnological field, how we can use the biotechnological bioremediation technology for the decontamination of the contaminated soil. So, Dr. Megha, can I continue? Is it time or? Hello? Hello? Okay, I think. May I continue or hello? Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. So can I continue or is Yes, there any ma'am. time restriction? Ma'am, actually time restriction was there, but as the interaction is going quite interesting, so you can continue, ma'am. I think Okay, students' fine. perspective. Okay, then fine. Thank you. So when we yes, we have understand that the different positive and negative aspects of any particular technology. So when we talk about the nanotechnology in agriculture, so it highlights basically nanosensors and nanoparticle mediated delivery of genes in the plants are also considered for the particular agriculture use. So for example, आपने बोला कि particular gene अगर कोई जीन important है या उस जीन की कुछ बहुत positive characteristics हैं, तो by with the help of nanotechnology we can also develop some nanosensor which can indicate the जो कि पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फील्ड से न्यूट्रिएंट सॉइल न्यूट्रिएंट कम हो जाने पर आपको इंडिकेट कर सके कि यहाँ पे नाइट्रोजन कम हो गया है या यहाँ पे फॉस्फोरस कम हो गया, बिकॉज ऑल दिस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर क्रॉप for the development and growth. So we have to develop the nano sensor for the agriculture sectors. Plant-based maybe also plant-based nano sensors also, or some soil characteristics जो दिखा सके, और नैनो पार्टिकल्स मेडिटेड डिलीवरी ऑफ जीन्स जो हम कर सके, जो पर्टिकुलर टारगेट जहाँ पे हमारा है उस पर हम काम कर सकते हैं. So there are a lot of applications of nano particles in agriculture, starting from the nutrition and the phytopathogens control also. So again, there are these are the some area where still there are lot of scope of research and not much more research has been done in this area. So this is a very promising area where young generation can work in this area, and you can think of in this particular area to work how we can go with this particular, because nanotechnology is a very new area, so one can do some good advanced research work in this area also. And using nanoparticles as fertilizers or plant growth stimulation, antibacterial agents, pesticides and carrier for conventional pesticides.
So considering using nanoparticle in the agriculture, one must remember potential adverse effect, like I have already told the toxicity effect of the nanoparticle. So when we are developing any particular technology for the particular positive aspects of in particular area, we have to think about, we have to consider about the negative aspects or the toxicity aspects also, ki up to which, so that we can develop the technology in that way, so that we can develop the technology for the main purpose, but at the same time, uh, with the help of our technology, we will not harm to the other particular area also. So these two aspects we have to consider. So after the nano pesticides, there are some other area, nano fertilizers also. Nano fertilizers are also available in the market, and it is a very emerging eco-friendly approach for sustainable agriculture. And fertilizers basically play pivotal role in increasing the agriculture production up to 30 to 30 40 percentage. So there are research available in the different R&D sectors that they prove that by using the nano fertilizers, they enhance the productivity of the particular agriculture crop. And nano fertilizers may also contain nano zinc, silica, iron, all these particular elements. As you are aware about that, these are the micronutrients which are very much useful for the plants also. So if we are using this type of nano fertilizers, then without harming the plants, we can enhance the productivity and we can enhance the yield of the particular plants. And nanofertilizers represent an efficient means to distribute fertilizers in controlled fashion with the highly site specifically. जहाँ पे नैनो फर्टिलाइजर, सपोज अगर आप किसी एग्रीकल्चर साइट में, जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर नैनो फर्टिलाइजर का जितना यूज़, अगर आपको बायोसेंसर से पता चलता है कि इस पर्टिकुलर साइट पे आपको यूज़ करना है, तो आप वहीं पे करेंगे, बिकॉज किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा डोज भी हार्मफुल होती है और कम डोज भी हार्मफुल होती है. अगर आप खाना ज़्यादा खा लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर यू. अगर आप खाना कम खाओगे, दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल. तो आपको एक मेंटेन वे में आपको चीज़ों को कंज्यूम करना है. तो इस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी एग्रीकल्चर क्रॉप में, एग्रीकल्चर फील्ड में फर्टिलाइजर्स डाल दिया और वो फर्टिलाइजर जहाँ पे, जिस जगह पे फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे डाल दिया, तो वहाँ पे जो प्लांट होगा वो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को कंज्यूम कर लेगा, यूज़ कर लेगा, सो दैट उसकी जो यील्ड और ग्रोथ होगी वो उसमें कुछ डिफरेंट मतलब उसके जो उसके अंदर की जो क्वांटिटी होगी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की, वो डिफरेंट हो जाएगी. तो इन दैट वे हमें बाय विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वी कैन ऑल्सो वर्क इन दिस एरिया, सो दैट कि based on the requirement of the particular area we can use the nano fertilizers in that particular area only. And fertilizers formulations of chitosan and nanoparticles and controlled relax NPK, also with the supply of the phosphorus nutrient to crop and fertilizers, loaded nanoclays. Nanoclays, clay is a very natural nanoparticle, and there are also some nutrients is also available in the clay. So we can also use some natural nanoparticles for our agriculture purposes. So in the field of agriculture purposes, we can use and we can also develop some composite. Composite means composition of two particular elements. So it is not necessary that we use only one particular element as a fertilizers. We can also prepare some composite. For example, अभी अगर आप लोगों ने वर्मी कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग सुना है, किया है आप लोगों ने, कंपोस्टिंग इज बेसिकली बायो कंपोस्टिंग जो होती है, वो सारे आपको जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको आपको कन्वर्ट करना है कंपोस्ट में, एंड यू can use that particular compost for the agriculture crop. So in the big platform we can also develop the composite, not compost. Compost is different thing, composites is different. Composites means combination of two particular things. So we can develop composites, and we can use that composite for the purpose of the nano fertilizers. So there are different types of nano fertilizers available in the market also. And pesticide, if we're talking about the pesticides, so in recent development, nano encapsulated word, if you are here, if you heard about that, there are a lot of nano encapsulated pesticide formulation is already available in the market, and it has slow releasing properties with enhanced solubility. And formulation of the nano encapsulation pesticide led to the reduce the doses of the pesticide and human being exposure to them, which is environmentally friendly and for the crop protection.
So by using the nano pesticide, at least we can reduce some harmful effect of the pesticide from the agriculture field. So the development of the non-toxic and promising pesticide delivery system for increasing global food production while reducing the negative environment impact. Basically, the nano encapsulation is used to develop the quality of product of desired chemical only. As I told you earlier that by using the nano pesticide, we can only target the particular pesticide instead of the harmful impact of pesticide to the other pesticide also. So we can use the nano pesticide as a control way. So recently, Yes, yes, please. ma'am, it is a sustained release system, Yeah. nanocapsulation, Yes, which, yes, yes. yes, ma'am. So recently, few chemicals companies openly promote nanoscale pesticide for the sale as a micro encapsulation pesticide also. So there are many companies working in this particular area, but as environmentalist, I prefer the natural pesticide formulation with the help of the natural plant-based or microbial-based pesticide, and there are a lot of methodologies also available. So there is a scope for you youngster that you can develop particular pesticide formulation with the help of the natural nanoparticles available in the nature. So again, there are some nano pesticide like nano formulation of pesticide in the form of nano emulsion, nano suspension, nano encapsulation, and nanoparticles. Also, we can use all these for the for the use of nanopesticide in the agriculture field. And what are the nanopesticides benefits? So basically, it increases efficiency toward pest. Definitely, we understand that, and it controlled releases also. And nano formulation also as a potential lower risk to the environment, as we discuss about that. It only targets the particular pest, so there's a less risk in using the nano pesticides, and it lowers the pest resistance. Because आप लोगों ने देखा होगा कि पेस्ट जब हम यूज करते हैं तो आफ्टर सम टाइम जो पेस्ट होते हैं वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं. तो आफ्टर यूजिंग द पेस्टिसाइड पर्टिकुलर पेस्टिसाइड आल्सो द पेस्ट इज नॉट गोइंग टू किल. तो बाय यूजिंग द नैनो पेस्टिसाइड जो पेस्ट होंगे वो उनका जो रेसिस्टेंस होगा वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज वी आर यूजिंग द टारगेटेड पेस्टिसाइड. सो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो lower the pest resistance, and it also increase the solubility of that particular pesticide, so it will be very much useful for our agriculture crops. So advantage of nano pesticide is basically small size application, small size advantage, because the size is very small, and big surface, because of the big surface area, it target, we can modify the target, and based on the nano based formulation, we can use this in the form of water based inclusion, target delivery also, controlled release कि हमें कितना pesticide release करना है, in that way we can use, and catalytical degradation also, whatever the uh, uh, contaminant is available in the field, we can also degrade by using the uh, formulated pesticides. So by this way, we can increase the efficacy, safety, and economy by using advanced nanotechnology, nano pesticides. So we can consider that using the nano pesticide, we can also move toward the green nanotechnology if we are using the natural nanoparticles. So green methods for synthesizing nanoparticles. The ultimate when we are using the nanotechnology, we are there is a one step synthesize of the nanoparticles. So when we are talking about the synthesize, so synthesize means developing a particular material. So green method for synthesizing nanomaterial with the help of plant extract are advantageous as it's simple, convenient, environmental friendly, and require less reaction time. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर नीम के पत्तों को हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं और उन नीम के पत्तों को अगर हम उसमें हम ओलिवेरा या और कोई प्लांट्स ऐड कर देते हैं और उसको स्प्रे बना के अगर हम डालते हैं, तो बाय दिस वे वी कैन यूजिंग द नैनो पार्टिकल्स as a spray form, and
इट इज़ अ हर्बल स्प्रे एंड इट कैन ओनली टारगेट और अगर हमें पता है कोई पर्टिकुलर जो पेस्टिसाइड है वो किस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड से खत्म होता है, तो हम वो पेस्टिसाइड को इसमें कंपोसाइड के रूप में बना करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं. So nanomaterial prepared by eco-friendly and green methods may increase agriculture potential for improving the fertilization process, plant growth regulators, pesticide delivery of active component and desired target sites. And basically it can also use for the treatment of water and also enhancing the absorption of the nutrient in the plants, because जो soil की quality होगी वो उससे disturb नहीं होगी, तो we can also contributing for the potential positive side of the soil characteristics as well as the plant growth. So in addition, the minimize the amount of the harmful chemicals that pollute our environment. This technology helps into the reducing the environment also. So by using the green nanotechnology, we are also able to reduce the environmental pollutant from the agriculture fields. So our group is also working in the area of this nanotechnological aspects for the environmental application. We have already published number of papers related to the nanotechnological application in the field of environment. Like this particular paper is already published in Environmental Nanotechnology Monitoring and Management. Recently is published. So in this paper we have try to finalize that the role of the zinc oxide based photocatalytic degradation of persistent pesticide. So pesticide means those pesticide which are available in the environment from the long time. बिकॉज जब आप पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो वो पेस्टिसाइड डिग्रेड नहीं होता है, वो पेस्टिसाइड बहुत टाइम तक इन्वायरमेंट में अवेलेबल रहता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है सॉइल पे वो धीरे धीरे सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड करता है. तो जितने भी परसिस्टेंट मतलब जो ऑलरेडी कंटिन्यूस प्रेजेंट रहते हैं फ्रॉम इन द पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप some nanoparticle application, how we can reduce the particular persistent pesticide which is available in the environment. So this paper basically focus on that, how we can degrade the how we can degrade the pesticide which is already available in the environment with the help of zinc oxide photocatalytic degradation. So our group is very much working in this area. If you required any particular assistant or particular discussion from our group, so you are most welcome. And Dr. Megha will share my mail ID, or otherwise I will also share my mail ID with you. If you want to discuss any particular thing in this area, in the area of the nanotechnological application, you are most welcome. So other paper also published in this particular area. As I told you that when we are talking about the application part of a particular technology, we also consider about the toxicology of the particular technology. So we have already published another paper on the nanotoxicology, health and environmental impacts. So with the what are the toxicology impact, we have considered those particular aspects also, and with the consideration of all these toxicological aspects, we move ahead for the application, positive application part of that, so that we can when we are developing, we are applying any particular technology, we can think about the toxicological also, and by reducing the toxicological aspect, we can implement our technology. So another publication is also how we synthesize, characterize the photocatalytic degradation of chloropyrifos. Chloropyrifos is one of the pesticide which is very much useful in agriculture crops. So how this particular how we develop the nanoparticle, we synthesize the nanoparticle in our laboratory, we characterize with the help of the advanced instrumentation which is available in the Central Institute of Gujarat, and then we have checked the degradation characteristics of the particular nanocomposite material for the degradation of the chloropyrifos. So again, all these particular research R&D work is available in the laboratory, but there is a need to transfer the technology from the lab to land. This is the high time to transfer the technology from lab to land. And when we are talking about the agriculture sector, we have already done some work, so we want to transfer our technology from lab to land, because we have already proved how we can degrade the chloropyrifos. Chloropyrifos is a very much used
in agriculture sector. So the only thing I just want to discuss with you all, we are already working in the area of the agriculture field, how the nanotechnology is very much useful. So this is basically the other area we are working by using nanotechnology for the environmental remediation. So nanotechnology has a potential of different environmental sectors like pollution prevention, treatment, remediation, and information. So this is basically the case study. I'm not going to discuss thoroughly because I think you have, this is the basically you can see in this picture. You can see this picture. These are the shape of the nanoparticle. As I discussed, the nanomaterial is based on the size and shape of the particle. So we have a advanced instrumentation with us. So with the help of the instrumentation, we can find out the shape and size of the particular nanoparticles, so that we can say that our material is under the nano size. So when we are doing any particular nano technological application part, we have to think about the size of the material. So again, this is the synthesis, how we synthesize the haploid nanoparticle. Is iron and zinc oxide we have developed in our laboratory for the degradation of the methyl orange. And then here pesticide, this is the experiment. You can see in this picture very clearly, before the experiment, this is the pesticide available in the water, and after the technology application, nanotechnological application, this is the pesticide, you know, you can check the treatment, how much we can so these are the some case study which in our laboratory is going on. And we have also checked at the same time the ecotoxicological aspects of particular nano material when we develop in the laboratory. So basically, the overall, I can say the conclusion of the presentation is that the application of the nanoscale science and nanotechnology in the agriculture and food industry and in the environmental sectors demonstrated to have a great potential in providing various innovations and improved solutions. Nanoparticles and controlled release and targeted delivery nanoformulations are broadly used for agrochemicals, basically nanopesticide and nanofertilizers. And nanotechnology provides the sustainable alternative for the advanced agriculture field. So there are a lot of scope in the environmental sector as well as the agriculture sector. So as you are the youth of our nation, so as I also mentioned this, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. So there are a lot of scope. You can do work in the area of the nanotechnological aspects, and you can develop if you can understand the nanotechnological application. You can develop the different technology for the beneficial. For anybody saying something? I think I'm not going to take much time. So with this, I would like to thank you all. Thank you all the students who Hello, patiently ma'am. listen me. Yes, yes, please. Ma'am, I'm Sanjay. Yes, Ma'am, I want to ask one question. yes, please. मैम नैनो पेस्टिसाइड बनाने के लिए हम नैनो एलिमेंट का यूज करते हैं जैसे कि जिंक, गोल्ड, सिल्वर। Yes. तो मैम डिफरेंट नैनो पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए हम उसका सिलेक्शन किस बेसिस पे करते हैं कि इसमें जिंक यूज होगा, इसमें गोल्ड यूज होगा, इसमें एल्यूमिनियम यूज होगा, कैसे सिलेक्शन करते हैं? नहीं, देखिए बहुत सारी चीज जो आपके ऑलरेडी पेस्टिसाइड, जब पेस्टिसाइड का कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पेस्टिसाइड में ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। तो हमें नैनो को यूज करके, बेसिकली नैनो इज बेस्ड ऑन द साइज, कि हमें उसका साइज कम करना है। जैसे पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें पूरा केमिकल्स है, एंड कंपोजिशन ऑफ द पेस्टिसाइड जो आप अगर आप कभी पढ़ेंगे, मैंने कंपैरिजन स्टडी नहीं किया है अभी तक, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो जो उसका केमिकल कंपोजिशन होता है वो बहुत हार्मफुल होता है, बिकॉज वो डायरेक्ट केमिकल्स होते हैं उसमें। अभी जब हमने नैनो टेक्नोलॉजी की बात की है, तो जैसा मैंने आपको बोला कि जब हम नैनो पेस्टिसाइड बना रहे हैं, तो नैनो पेस्टिसाइड में जो हमने बोला कि नैनो को बनाने के लिए, बिकॉज जब हम नैनो में कंसिडर करते हैं तो उसमें हम जो क्वांटिटी होती है वो कम लेते हैं, क्योंकि उसका
जो नैनो का क्वालिटी होता है वो यही होता है कि उसका सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से उसका जो इम्पैक्ट होता है वो इनहेंस हो जाता है, राइट। तो जहाँ पे आप प्योर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, अगर वहाँ पे अगर आप ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो अगर आप नैनो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो आप कम मात्रा में यूज करेंगे। तो जो आपका एलिमेंट आपको जो एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहा है वो एक आपका क्या हो रहा है, डाइल्यूटेड फॉर्म में जा रहा है और एक वो कम मात्रा में जा रहा है, जो कि आपके लिए आपके जो पेस्टिसाइड है उनको भी टारगेट कर पा रहा है और जो बाकी आपके क्रॉप्स हैं और जो अदर पेस्टिसाइड है उनको किल नहीं कर पा रहा है, उनको हार्मफुल नहीं कर पा रहा है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पेस्ट के लिए कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन जो पेस्टिसाइड ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें हम किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना नैनो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेट कर सकते हैं, सो दैट कि विद द यूज ऑफ नैनो पेस्टिसाइड विदाउट हार्मिंग the other agriculture crop or other pest, we can give our application of the nanotechnology for that particular purpose. अभी मैंने आपको बताया उसमें आप हर्बल भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे लीव्स प्लांट्स को भी आप नैनो पार्टिकल इज बेसिकली फॉर द जो आपका पाउडर फॉर्म है। तो अगर आप सपोज जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड को अगर आप नीम की लीव्स के साथ अगर नेचुरल नैनो पार्टिकल यूज कर रहे हो, आप उसमें अगर आपने 50% आपने सपोज 50% आपने नीम पाउडर यूज किया और आपने कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में आपने केमिकल्स भी यूज किया है, तो बट उसकी जो सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी यहाँ पे, राइट। तो आई एम बेसिकली फोकसिंग ऑन द हर्बल नैनो पेस्टिसाइड जो मैं आपको बात कर रही हूँ। यस, कॉमर्शियल नैनो पेस्टिसाइड इज ऑल्सो इन द मार्केट, बट एज अ स्टूडेंट मैं आपको इंकरेज कर रही हूँ कि आप फोकस करो कि जो हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास हर्ब्स है जो कि ऑलरेडी ट्रेडिशनल हमारे पास नॉलेज है, हमारे सीनियर्स के पास है, जो कि वो लोग प्लांट बेस्ड मटेरियल है उसको यूज करके पेस्टिसाइड को डिग्रेड करते थे। तो इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी वी कैन यूज दोज ट्रेडिशनल knowledge and we can add the traditional knowledge with the modern agriculture practices. So with combination of with those we can develop the midway of the particular technology so that we can use in a proper way without harming the environment. Okay ma'am, there is a scope, यही पे तो स्कोप है कि जहाँ पे आप किस तरह से लेस हार्मफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। Okay ma'am. Okay. Thank you ma'am. Thank you. Hello, ma'am. I'm not able to listen you. Your voice is not clear. Hello. 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 Yes, ma'am. Yes. 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 Hello. Hello. Yes. 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 I am Yes, able. ma'am. Yes. Yes. Ma'am, yes, ma'am. Huh. As you told us that neem leaves powder can be used in the agriculture for the pesticide Yes. as a pesticides. So, Yes. ma'am, my question is that can we use the neem leaves formulation in nano encapsulation delivery with the other excipients or the crude drugs? Yes, we can use. There are a lot of scope. Still, मैं बोला ना भी agriculture field में only from the last 1 decades we are working in these sectors, nanotechnology in agriculture. So there are a lot of scope of nanotechnology in the field of environment and agriculture. So there are a lot of R&D scope is available. Whatever idea in your mind, you can just try to find out the solution with the help of your idea. And there are a lot of literature is also available. You can go through the literature, and for the experimental setup, you can contact with any particular R&D laboratory. You can try to finish your experimental work and come with some solution. बिकॉज अभी तो ये R&D उस पे ही है, अभी तो एक्सपेरिमेंट लेवल पे ही है, अभी ये बहुत ज़्यादा बाहर नहीं गया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हम लोगों ने भी जो एक्सपेरिमेंट्स किया है, पेस्टिसाइड डिग्रेडेशन का एक्सपेरिमेंट किया है, जो परसिस्टेंट क्लोरोपाइरीफॉस का एक्सपेरिमेंट किया है, दैट एक्सपेरिमेंट इज ओनली विद अस इन द लेबोरेटरी। अगर इसको हमें फील्ड में लेके जाना है तो हम इसको कॉमर्शियल लेवल पे लेके जाने के लिए again we have to do lot of work कि हम इसको बड़े लेवल पे कैसे लेके जाएं, because in the laboratory we have a setup of conical flask and all that. We use very minimum quantity. So doing research in laboratory is very much different from the implementation of that technology in the field. So there are a lot of scope. You can do R&D in this particular sector. You can develop your skill if you are interested in this sector.
and there are a lot of scope to do many more research in this particular area. Okay, ma'am. Thank Yeah. you. Okay. Hello, ma'am. Yes, yes, please. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, yes, you are very much. Ma'am, recently I came to read that from agriculture waste materials we can produce ethanol. Yeah. Okay, how can we apply nanotechnology in recycling of agriculture waste materials? Again, there are a lot of work even in my laboratory also. There are few faculties working in this particular area कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे उन्होंने एनर्जी जनरेशन भी किया है. तो एनर्जी सेक्टर में ऑलरेडी नैनो टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है और लोग इस पे काम कर रहे हैं. मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है एनर्जी सेक्टर में हाउ, बट देर आर ऑल्सो आर लॉट ऑफ स्कोप. फॉर एग्जाम्पल जो मैंने काम किया आपको मैं बता रही हूँ कि हमने सोलर सेक्टर में काम किया है कि हाउ वी कैन इनहेंस द एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल जो सोलर पैनल्स होते हैं, राइट, सोलर पैनल से आप सबको Okay, पता ma'am. है कि सोलर पैनल हम यूज़ करते हैं फॉर आप वाटर को क्या करते हैं कि हम इवेपोरेट कराते हैं और जो इवेपोरेटेड वाटर होता है वो बहुत प्योर फॉर्म होता है. तो सोलर ट्यूब्स को लेकर, तो सोलर ट्यूब्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अगर हम उसमें नैनो कोटिंग कर दें, कार्बन कोटिंग कर दें, कार्बन नैनो ट्यूब्स की कोटिंग कर दें, तो उससे जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. तो जस्ट फॉर द इन्हेंसमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, जैसे आपने अभी बोला कि एनर्जी सेक्टर में हम कैसे उसको इन्हेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी. सो अगेन व्हेन जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स को यूज़ किया, अगर वहाँ पे आप कोई मटेरियल ऐड कर देते हैं तो उससे जो उसकी इफिशियंसी है वो इन्हेंस हो जाती है. बेसिकली जब हम नैनो पार्टिकल नैनो मटेरियल यूज़ करते हैं तो बेसिकली वी आर एज्यूमिंग दैट वी आर इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेडिसिन के सेक्टर में बोलते हैं कि अभी आपको सपोज कोई पर्टिकुलर प्लांट है, आप सब बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हो, एक प्लांट है बायोटेक्नोलॉजी मतलब पर्टिकुलर प्लांट है जिसकी पर्टिकुलर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल है या एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, ठीक है. तो आप वैसे भी उसको इनिबिशन जोन पे रख के देख सकते हो कि पर्टिकुलर प्लांट की एक पर्टिकुलर क्वालिटी है फॉर एंटी माइक्रोबियल पर्पस. बट अगर उसमें मैंने बोला कि इसमें मैं नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहती हूँ, तो जो मेरा प्लांट मटेरियल है उसमें मैंने नैनो पार्टिकल यूज़ किया. नैनो पार्टिकल मैंने कहाँ से बनाया? नैनो पार्टिकल मैंने वहीं से बनाया जो पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल है. उसमें मैंने थोड़ा सा एल्युमिनियम या उसमें मैंने गोल्ड ऐड कर दिया या उसमें मैंने एल्युमिनियम ऐड कर दिया. बहुत लोग उसमें और भी एलिमेंट्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल या एंटी फंगल एक्टिविटी शो करता है. अगर मैं उसमें नैनो पार्टिकल ऐड कर देती हूँ तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो इन्हेंस हो जाती है. तो बेसिकली using of nanotechnology, nanomaterial is to enhance the quality, enhance the characteristic feature of that particular thing. So by this way we can improve the electricity generation, or we can use the particular application part by using the nanomaterial. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Any question or Hello, ma'am. yes, please. Ma'am, can you give some example of the bottom-up nanotechnology? बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी, टॉप डाउन. ओके, बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था मेडिसिन. अब मेडिसिन है ना, तो कंपोजिशन उस मेडिसिन का जो कंपोजिशन है वो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेके बनाया गया है. जब आप, मैंने इसलिए पहले एग्जांपल दिया था आपको कि जब आप किसी मेडिसिन का कंपोजिशन पढ़ते हैं तो उसमें एक ही चीज़ नहीं रहती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. तो वो जो सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं वो सारी चीज़ें नैनो रेंज में ऐड होती हैं. तो जो मटेरियल होता है वो नैनो रेंज में होता है. उन मटेरियल्स को मिला के आपको एक कैप्सूल बनता है या आपको एक मेडिसिन बनती है. दैट इज द एग्जांपल ऑफ बॉटम अप अप्रोच. Okay, ma'am. बॉटम अप का अप्रोच है कि आप छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स को मिला करके कोई बड़ा चीज बना रहे हो. Ma'am, we can say that the binding of tablet या with the small particles. या हेलो मैम. यस प्लीज. मैम जैसे कि ये किसान लोग ये यूरिया डालते हैं, ये यूरिया के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नैनोमीटर में तो होते नहीं है मैम. अगर उसका हम पाउडर बना लें तो इससे कुछ सहायता मिल सकती है? यस, अभी नैनो यूरिया मार्केट में आ गया है.
नैनो का नैनो यूरिया इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट इफ यू सर्च. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको नैनो यूरिया दिखेगा. तो बेसिकली अभी जो नैनो यूरिया का जो नॉर्मली यूज करते थे अभी तक फार्मर्स, उसका साइज नैनो की रेंज में नहीं था. बट नैनो अभी जो नैनो का एप्लीकेशन हम देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज कि नैनो रेंज में आने से उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है और उसका वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है. तो ये दो क्वालिटी बढ़ने से क्या होता है कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, एप्लीकेशन पार्ट होता है, वो इनहेंस हो जाता है. ओके मैम, ये ऑलरेडी रिसर्च हो गया है. या ऑलरेडी चल रहा है. इसमें बहुत सारा देखो रिसर्च तो रिसर्च है. रिसर्च में तो देयर आर लॉट ऑफ स्कोप. बट क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी इज अ न्यू एरिया and it is not new area, but for agriculture field and for environmental application it is, there are lot of scope in this area to work on that. It is not like इस पे research नहीं हो रहा है. Research हो रहा है, but still there are lot of scope because a new area. Okay. Any other question please? So I think there are no more questions. So students, if you have question, you can ask me